Good morning to all. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Okay, now can you see the black screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Ripple factor. Yes. So we will continue with half wave rectifier. We have to derive one or two more parameters, then we will start full wave rectifier. So if you have any doubt at any point in time, so you can raise your hand. So in the last class, we have completed deriving certain parameters. Yuvraj Singh. Yes, Yuvraj. सर एक चीज पूछनी थी सर पीछे की एक बार। हाँ जी पूछो। सर जैसे वो था ना सर डायोड में जो पीएन जंक्शन होते हैं तो सर हमने तो ऐसे पढ़ा है कि सर जैसे एक एन टाइप एक पी टाइप तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमा है तो वो पी में चले जाएंगे और उसमें पॉजिटिव पी टाइप में पी ज्यादा है वो नेगेटिव में चले जाएंगे। सर वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर सर मैंने उसमें बुक में देखा उसमें माइनॉरिटी की बात कर रहा है वो कह रहा है मेजॉरिटी वही रहेंगे। जब वो चले जाएंगे उसके बाद तो माइनॉरिटी हो जाएंगे ना वहां पर। और किस बुक में पढ़ा है, बुक का नाम बताओ आप। बुक का सर जो आपने उसमें बताई थी। ठीक है, वो पेज शेयर करना मेरे साथ। फिर आप व्हाट्सएप नंबर तो मेरा सबके पास है, तो आप पेज शेयर करना, वहां पे हम डिस्कस करेंगे उसको, देखेंगे क्या लिखा है और आप उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, साई सुहास। ओके सर। ठीक है सर पिछले वाली क्लास की रिकॉर्डेड अपलोड नहीं है। अपलोड कर दिया था मैंने। नहीं सर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। वैसे तो मैंने अपलोड किया था, मे बी कुछ फेलियर हो गया हो। ओके सर। ठीक है। Okay, so for the half wave rectifier, first we have derived the DC voltage, that was Vm by pi. Then we have derived RMS value, that was Vm by 2, and efficiency, that was 40.6% if the resistance of diode at secondary winding is 0. And if we consider the resistance of the winding, then we have to include while calculating the AC power. So I square RMS will be RL plus RF plus RS, and this will be the formula. So this was our last topic that we have discussed. So today we will define one more parameter, very important parameter, that is called ripple factor. So that is defined as ratio of AC signal to DC signal in the output waveform, and the ripple factor is VAC by VDC, and this is the relation between RMS voltage, AC voltage and DC voltage. So Vrms square is equal to VAC square plus VDC square. Okay, so this can be proved by yes Sarthak. सो हमारा सर जीआर वेटिंग रूम में है सर। ओके ओके, वेटिंग रूम तो मैंने डिसेबल कर रखा है। सो
पता वो नहीं होता क्यों। उसकी कनेक्टिविटी वो ज्वाइन हो जाएगा अकॉर्डिंगली। मैं डिसेबल कर देता हूँ वेटिंग रूम, मुझे दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप उसको कहिए एक बार फिर से रिजॉइन कर ले। ठीक है, ओके सर। वेटिंग रूम तो डिसेबल है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए किसी भी स्टूडेंट को, 118 पार्टिसिपेंट है मान लीजिए, आपको वेटिंग रूम में दिखा रहा है, तो आप उसको वापस से एक बार रिजॉइन कर सकते हैं लिंक से, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर नहीं दिखाता है कौन वेटिंग रूम में है। मेरे लिए तो वो डिसेबल सीट में है। Okay, so this is the very famous formula that can be very proved, but we don't have to prove it for this course. So the definition is that V square RMS is equal to V square AC plus V square DC. Okay, so basically this is the DC wave. This is the DC wave that we want at the final output. Okay, and the frequency of this wave should be exactly equal to 0. But due to some irregularities, if our design is not perfect, so this wave can be something like this. Okay, a very small amount of ripples. So these are called ripples. पानी में पत्थर फेंकते हो तो वो ripples waves. So that is kind of a ripple. भाई ओके, सो जिसका साई आपका डाउट अगर कंप्लीट हो गया हो तो आप हैंड को डाउन कर सकते हैं। So these are basically ripples. Okay, and our output is something like that. At the output of half wave rectifier, you are receiving something like this. So obviously this is going to have a large amount of ripple. Okay, so we defined ripple factor for this, that is VAC by VDC square, and we have already calculated VRMS and VDC. So we don't need to calculate VAC separately. We can use this formula to calculate the value of VAC square. So VAC can be given by under root of VRMS square minus VDC square, and you can take VDC common. So under root of VDC whole square, that is common, and inside you have VRMS square by VDC square minus 1. Okay, VDC can be taken out of the under root. So VAC is equal to, and I am taking this VDC to the denominator, left hand side denominator, VDC, that is under root of VRMS by VDC whole square minus 1. Okay, VRMS is Vm by 2 and VDC is Vm by pi whole square minus 1, and the value, calculated value, will be 1.21. Okay, so this is the value of ripple factor. So a very large value. Ideally it should be 0. Ideally we don't want any AC component. Okay, so for this DC output, from this AC to DC, the amount of ripple should be 0. Okay, so ripple factor of the final DC output voltage should be 0. But we are calculating this term for half wave rectifier, so obviously we will have some values. So that is 1.21, a very large. This is considered as a large value. Okay. Yes, Divyang. Sir, this is 1.21 is only for half wave, not for full wave, right? No, full wave का a separate derivation होगा. Yes, Okay, this is thank for you. half wave. So every parameter like VDC, VAC, VRMS, ripple factor, efficiency, that will be changed for full wave rectifier. Okay, so we will see shortly. So now we are going to start full wave rectifier.
And in the full wave rectifier, we have to study two categories. First is center tap full wave rectifier, and the second is bridge rectifier. So we will start with center tap full wave rectifier, and I believe that all of you have performed this experiment in the lab. Viral. Yes, Avira? Sir, आपने बोला था ripple factor appears because of the imperfections in the circuit, right? बट हमने क्या कहते हैं मल्टीसिम पे भी परफॉर्म किया था, उसमें कोई imperfections तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो मतलब आइडियल केसेस हैं सारे। हाँ, वो तो सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो फिर उसमें भी तो रिपल फैक्टर आता है। नहीं, वो सिलिकॉन डायोड उसमें मैं मतलब आई एम आस्किंग उसमें आता है कि नहीं, मतलब वेवफॉर्म तो काफी स्मूथ था उसमें। वेवफॉर्म देखो, इसमें तो डेफिनेटली रिपल आएगा। दिस इज एसी वेव, दिस इज नॉट अ डीसी वेव, दिस इज पल्सेटिंग डीसी, तो ऑब्वियसली इसके लिए तो आएगा। ओके, इसमें तो आएगा। मैं बात कर रहा हूं ये जो आप इनपुट वेव दोगे और ये आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर होगा और ये आपका फाइनल डीसी वेव होगा, ठीक है? तो इफ दिस सर्किट इज परफेक्ट, दिस विल बी अ परफेक्ट स्मूथ लाइन। इफ दिस सर्किट इज नॉट परफेक्ट, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, सम वेरिएशन। ओके, सो आप उसमें जनरल केस की बात कर रही हो, नॉट टॉकिंग अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। So I am not talking about AC to DC converter. I am talking about half wave rectifier. I am talking about half wave rectifier. So इस वेव का अगर मैं इस फुल AC to DC converter के रिपल फैक्टर की बात करूं तो ideally it should be 0, ideally. But half wave rectifier is one of the part of this circuit. Okay. ठीक है? और obviously इसमें AC वेव तो है ही, तो कुछ तो आएगा, definitely कुछ आएगा। So ripple factor of this circuit should be 0. इसका हम 0, इसका जितना कम, जितना ऑप्टिमाइज कर ले, इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फुल वेव लगाकर, तो उसको जितना ऑप्टिमाइज कर ले, क्योंकि इंटरमीडिएट सर्किट्स को आप जितना ऑप्टिमाइज करोगे फाइनल आउटपुट आपको उतना अच्छा मिलेगा। दैट इज द केस। ओके सर, थैंक यू। Okay, so this is the schematic diagram of center tap full wave rectifier. So this is the primary winding, and we have secondary winding with the center connection at its center. Okay, so that's why it is called as center tap. We have three connections, one at center, two at its extreme end. Okay, so if this is the input waveform Vi, okay, again we are taking the same input, a sine wave of maximum magnitude Vm. So this secondary winding, so this is a step up transformer, the ratio is 1:2. They have taken in Boylston, they have taken a ratio of 1:2. So if Vi is there, 2 Vi will appear across this, 2 times it will step up the step up the input voltage 2 times. So plus minus Vi will appear at this half, the first half, and this plus minus Vi will appear across this half, and overall this becomes 2 Vi. So this secondary winding is stepping up the voltage by factor 2. Okay, now you can see that this is one half wave rectifier. The diode, instead of resistance, putting resistance here, the resistance is shifted in the lower wire. And this is the second half wave rectifier. First half wave rectifier, second half wave rectifier. So these diodes are connected in such a way that one of the diode will conduct in 1/2 cycle. Okay, so let us see what will happen. Okay, so first positive cycle will appear if we will start our analysis from t equal to 0. So first positive cycle is appearing, that is during period t equal to 0 to t by 2. So plus will appear here, minus will appear here, and in the second part, plus will appear at the top and minus will appear at the bottom. So this is how this winding is designed. Okay, this is how the due to induction the polarities will appear. So now because of this minus sign, D2 will be reverse bias, so make it an open circuit. D1 is conducting while D2 is in off state. So D1 is conducting, replace it with a short circuit, and now this is the complete loop. Okay, this is the complete loop. So
simply by applying KVL, you can say that V naught. Simply by applying KVL, you can say that V naught will be equal to Vm. Okay, so the direction of current is clockwise. Okay, so if this is your resistance and current is flowing from left to right, so positive charge, positive polarity will appear to the left side and negative polarity will appear at the right side. Okay, so you can see that current is in this resistance R, current is flowing from this point A to point B. So positive will appear at point A, negative will appear at point B. And we are measuring voltage between A and B. We are measuring VAB. This is how we have defined our V output. So we will get a positive wave. Okay, V naught is equal to Vm. So exactly V naught will be replicating Vi. So for 0 to T by 2, we will get a output in the positive half. Okay, very simple functioning, exactly behaving like a half wave rectifier. Very simple. Next, this is repeated. Okay, next, for period T by 2 to T, that is next half. Okay, negative cycle will appear, negative cycle of input waveform will appear. So because of induction, we will have minus here, plus here, again minus at this point, plus at this point. So because of this, polarities, D1 will be in off state, open circuited. D2 is conducting while D1 is in off state. So D2 is replaced by a short circuit. Okay, so now plus charge is here and current will flow in anti-clockwise direction. And this is again point A, this is again point B. And you can see that if you apply KVL in this loop, so suppose I am moving in this direction, okay, or in this direction also, so whatever you like. So you will have V naught is equal to minus of Vm. Okay, so Vm, Vn. Vm is the maximum voltage. So V naught is equal to minus of Vn. Apply KVL in this loop. Okay, so Vin is negative. Vin is negative. Negative makes it positive. Okay, so again you will be receiving waveform similar to Vin, but this time it is multiplied by a minus sign. So multiplication of minus sign means flipping, mirroring. This will be mirrored in the across this T axis. So this will behave like a mirror. So this will be mirrored on the positive side. So exactly same input waveform, but now on the opposite side. Also from the current direction of current, you can verify this. Current is flowing from point A and B. Okay, so again positive charge will appear here, negative charge will appear here. So our polarity is not changed. Polarity of V naught is not changed. It was same as it was in the first case. So again the direction of the waveform is same. So here you can see that time period of this input waveform is T. Okay, time period of this waveform is T by 2. Now this is the at T by 2, it is again repeating. Then it will again repeat like this. So time period of this wave is T by 2. And suppose the frequency of this wave is F. So the frequency of the output wave will be 2F. If frequency is doubled. So now we have by using two diodes, we were mirroring this negative to the positive side. This is the very basic concept. Okay, so now we have considered ideal diode till now. What if our diode are real? So now we are taking a real diode. Okay, so again the same thing will happen. Voltage drop of Vk will take place. Okay, so during the first, yes, I am coming to your doubt. So during the positive half cycle, okay, voltage Vk drop will be across this diode. So if this is blue color is your input waveform, the red color will be your output waveform. And during the negative half cycle, Vk drop will be across this D2. So again, you will have same kind of behavior. Ayush. Yes, Ayush. सर आपने जो आइडियल केस बताया था अभी फुल वेव का, उसमें आपने V नॉट इज इक्वल टू
माइनस वीएम का है, पर वैसे हम वी इन तो अगर वैसे हम केवीएल इसमें लगाते हैं तो हमारे वी नॉट इज इक्वल टू वीएम ही आना चाहिए वैसे तो। एक मिनट, वी नॉट प्लस माइनस, दिस इज प्लस वी नॉट is equal to minus v naught. So okay, sorry, हाँ, plus v naught, अगर मैं ऐसे जाऊँ माइनस माइनस v n is equal to 0, so v naught is equal to okay, हाँ, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सॉरी, वी एन। ओके, तो मैंने ये जो यहाँ पे लगाया था, आप करेक्ट हो, मैंने यहाँ पे साइन कंसीडर करके लगाया था, माइनस करके। अब अगर आप वी एन, तो बात तो सही है, बट दिस लूप, दिस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, this will be something like this, माइनस प्लस इस तरह से होगा। इसको अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, प्लस माइनस, एंड दिस इज योर, नाउ हियर इज योर पॉइंट ए, हियर इज योर पॉइंट बी। ओके, सो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप वी बी ए कैलकुलेट, दिस वी नॉट इज वी बी ए। ओके, आई वॉन्ट वी ए बी, I want VAB. Now, if you are applying in this direction, so you are writing basically VBA. Okay, आप समझना, V नॉट की पोलैरिटी पॉजिटिव इस पॉइंट पे है, नेगेटिव इस पॉइंट पे है। yes, तो yes. आप जो लिख रहे हो that is V नॉट minus VR, and now in this case this VR is VB minus VA. Okay, so that's why you are getting V naught is equal to VR, so V naught is equal to VB minus VA. Got it? But I want VA minus VB. Okay, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। हमने उसका साइन फिक्स कर दिया ना। अब आप देखो करंट, मुझे VA, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर यही आएगा ना, V नॉट इज इक्वल टू VM ही आएगा फिर तो। VA minus this VB will give you this plus तब देखो, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनाऊं, दिस इज माय दिस पॉइंट, this is my second point, so I have minus here, plus here, and if I ignore this circuit, this is open circuit, so if I move this A point here, A point is connected to this plus, yes, sir. and this B point is connected to this minus 1, so now you can see that VAB is equal to VN. ओके, हाँ, वी इन। तो हाँ, ये फिर नेगेटिव नहीं आएगा, वो मैं कुछ गलत एकदम मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, मैं इसलिए हम कहते हैं, इसलिए मैं नेगेटिव में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी इवन कंफ्यूजन हो जाता है नेगेटिव में। ओके, सो साइन विल बी सेम बिकॉज यू कैन सी ए पे पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव है। यस सर, पॉजिटिव वाला जो है वो पॉजिटिव मतलब ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगा। ओके, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ मॉड, नेगेटिव साइड में मैं हमेशा मॉड वीन लिख के करने का प्रेफर करता हूँ। ओके, यस सर, ओके, सो इफ द डायोड इज रियल, VK voltage, VK knee voltage will drop across this whichever the diode D1 or D2. You have two diodes D1 and D2. So whichever diode is conducting, it will drop voltage VK across it, and this red in color, this will be the actual behavior. Okay, so this blue color was the behavior for ideal diode, and this red color is behavior of real diode. So there is a gap of PV naught that is equal to VK, knee voltage, and PIV, P converse voltage, is given 2 VM, that we will see. Okay. So these are the waveforms for the full wave rectifier. For my input wave with maximum value of VM, this is my output voltage.
Okay, so this is my output waveform. Okay, full wave rectified, and now this is VDC, voltage drop across this diode. So this is the waveform. Okay, starting from 0, going up to -2 VM, then again moving back to 0, then again moving back to -2 VM. So that's why we define peak inverse voltage, this value, maximum value in the negative side is defined as peak inverse voltage, and in this case we have 2 times VM. Okay, so can anyone tell why we are getting 2 VM? कोई बता सकता है 2 VM क्यों मिल रहा है हमें? हाफ वेव में तो VM मिलता था. Okay, so this PIV, peak inverse voltage, is defined for the diode which is in off state. So PIV is defined for the diode which is in off state, which is off. Okay, on जो होता है उसके लिए कभी डिफाइन नहीं होता है. On हो गया तो उसके अक्रॉस तो फिक्स वोल्टेज VK हम कंसीडर करके चलेंगे. So in this circuit, a partial condition is given to you. So imagine that D1 is in on state, and assuming that diodes are ideal. So D1 is in on, this was D1, this is D2. D2 is in on state. So I have replaced D2 by a short circuit like this, and D1 is off. So we will define PIV for diode D1. Okay, so now this will be the condition. This will be the condition. So we have to define the voltage across this 2 point, voltage drop across this 2 point. Okay, so now here you can see that VM maximum voltage. Okay, now we will talk in terms of maximum voltage. So maximum voltage drop across this resistor could be VM. This is the waveform. This is the waveform. So maximum voltage across this resistance could be VM. And along this winding, this is our input secondary input voltage. Okay, and this is the waveform. So here also the maximum voltage is VM. So VM, VM. Okay, so you apply KVL across this. So this give you, this is PIV is equal to V secondary. PIV is equal to V secondary plus voltage across this resistance. That's give you VM plus VM, 2 VM. So peak inverse voltage for center tap rectifier is 2 VM. This is the only disadvantage. Okay, this is the disadvantage. This is not favorable. So you can see that you have 2 problems in center tap rectifier. First is this, creating this kind of transformer which is having a terminal in between. So it is not easy to identify the midpoint. Okay, slightly it will move here and there by delta amount. So this this proportion will change by accordingly. So this is one of the problem. And second problem is that peak inverse voltage is large, 2 VM. So if you are giving input wave V in is equal to 10 sine omega t. Okay, so PIV will become 20 volt. So this is the problem. So for half wave rectifier, it was 10 volt. Okay, and why this is problem? When we will discuss the concept of breakdown voltage. Okay, here we will again repeat the same thing. So we have one term, breakdown voltage for diode. So when we will discuss this, then we will address this issue again. Okay. Yes, Akshay. सर ये समझ नहीं आया 2 VM कैसे आया? एक तो डायोड के क्रॉस ग्रुप होगी क्योंकि एक रिवर्स बायस में था और दूसरा सर ये अभी प्रेजेंट स्टेट है हमारे सर्किट का जिसमें D2 इज ऑन. कोई भी एक स्टेट ले लिया, या तो D1 ऑफ होगा या D2 ऑफ होगा. तो हमने मान लिया कि D2 इज ऑन, D1 इज ऑफ.
Now this term peak inverse voltage, that is defined for the diode which is in off state. Okay, so इस कंडीशन में PIV किसके लिए डिफाइन होगा? D1 के लिए, ठीक है। अब ये देखो क्योंकि D2 ऑन स्टेट में है तो करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसे, और इसकी वजह से क्या होगा, VM वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, होगा ना इसकी वजह से। तो ये VM ड्रॉप D2 वाले जो लोअर सर्किट है वहां पे कंडक्शन की वजह से, करंट फ्लो की वजह से हो रहा है, और ये जो VM है ये इंडक्शन की वजह से होगा। यू हैव प्राइमरी वाइंडिंग माइनस प्लस, ये केस रहा होगा तभी तो D2 ऑन स्टेट में है और D1 ऑफ स्टेट में, माइनस इधर आया प्लस इधर आया। ओके, सो VM दिस इज अगेन इक्वल टू VM, माइनस प्लस VM, इक्वल हाफ में डिवाइड, इक्वल हाफ में होता है वोल्ट, VM इधर है तो VM इधर भी होगा सेम पोलैरिटी में, माइनस प्लस। तो ये वाला जो VM था ये तो रिफ्लेक्ट हो गया किसके अक्रॉस आ गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। अब जो मैं PIV कैलकुलेट कर रहा हूं वो मैं ऊपर वाले लूप में कर रहा हूं, क्योंकि डायोड D1 इज इन द अपर हाफ एंड आई हैव टू अप्लाई KVL in the upper loop. Okay, so in this loop if I will apply this KVL, so this PIV is will be the sum of voltage drop across this resistor VR and voltage drop across this secondary winding. तो इस पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा, ये पॉइंट किससे कनेक्ट है, सेकेंडरी वाइंडिंग, इस वाइंडिंग से, और ये पॉइंट किससे कनेक्ट है, रेजिस्टेंस से, तो वी हैव टू ऐड देयर वोल्टेज ड्रॉप्स। ओके, वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस टू पॉइंट, तो दोनों के वोल्टेज ड्रॉप हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। सो VR इज VM एंड आल्सो V सेकेंडरी इज आल्सो इक्वल टू VM, वेयर VM इज दिस मैक्सिमम वोल्टेज, मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैं मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, साइन वेव की बात नहीं कर रहे, मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दिस इज कॉल्ड PIV। और इन टर्म्स ऑफ, अगर आप साइन वेव के टर्म्स में लिखना चाहते हो, सो VD1 दैट विल बी इक्वल टू VR प्लस दिस अपर हाफ VM sin omega t. Okay, so VD1 max will be equal to VR, maximum value of VR will be VM, and maximum value of this will be also equal to VM. एक मिनट, राघव, यस राघव। सर ये बेसिकली इंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर हम स्टेप डाउन लेंगे तो उसमें अलग आएगी ना पीक इनवर्स, नंबर ऑफ टर्न्स पे। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे जो बॉयलस्टेड में जो जिस बुक को हम रेफर कर रहे हैं उसने स्टेप अप लिया हुआ है, 1:2 लिया हुआ है, और उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर आप VI sin ओमेगा t प्रोवाइड करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स VI sin ओमेगा t, तो VI sin ओमेगा t आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 2 VI sin ओमेगा t, और इस हाफ में VI sin ओमेगा t, इस हाफ में VI sin ओमेगा t, so it will behave like a half wave rectifier, सेम वो फील लाने के लिए। यस सर, अगर स्टेप डाउन होगा तो अलग आएगी ना पीक इनवर्स, स्टेप डाउन होगा तो पीक इनवर्स वोल्टेज अलग आएगी ना उसमें, वो हमेशा ये जो वैल्यू यहाँ पे जो भी होगा ना आपका V सेकेंडरी वोल्टेज, V प्राइम साइन ओमेगा t, इस पे डिपेंड करता है, इस वैल्यू पे, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल। सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे जो भी साइन जो इक्वेशन है इसका 2 टाइम्स, दैट्स इट। ओके सर। एंड वी हैव, ओके, जिसके डाउट होते जा रहे हैं वो अपने हाथ प्लीज डाउन कर लीजिए। वी हैव नाउ आयुष। यस आयुष। सर वो एक ग्राफ वाली स्लाइड लेके ना, इससे अगली वाली स्लाइड है जो, एक मिनट, कौन सी थी? नहीं, ओके, जी वाली, हाँ। इस पे जो थर्ड ग्राफ है इसके अंदर हमने दोनों पिक्स नीचे बनाई है, ये वाला मतलब बताना है, मतलब कैसे दोनों पे, मतलब समझ नहीं आया मुझे ये ग्राफ किस
नीचे वाला- क्यों है इसके दोनों पे? ये वाला समझ, ये एक मिनट, आप एक क्वेश्चन फिर से एक बार पूछो। ये जो 3 ग्राफ है इसमें, ये थर्ड वाला ग्राफ, this is voltage drop across diode which is off। ओके, जो ऑन होगा उसके अक्रॉस तो मुझे देखना ही नहीं है, सीधे सीधे वी के आ जाएगा। हाँ हाँ ओके, सो जो डायोड ऑफ है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि रिवर्स आता है, याद है? हाफ वेव रेक्टिफायर मुझे हाँ हाँ ठीक है सर। पिछली स्लाइड ले जाता हूँ, एक मिनट। या लाइक दिस। सो दिस यस सर। किसी ने मुझसे ये तो हमने डिफाइन किया था, फिर एक स्टूडेंट और ने पूछा था कि अगर रियल डायोड कंसीडर करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड क्या होगा? तो इस तरह से होगा 0.7 प्लस के लिए, फिर एज इट इज। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें, सो दिस इज माय, सपोज दिस इज ऑफ, D1 is off, so I want to calculate voltage drop across this this diode. Okay, this will be in on state, so we have Vk like this. So this is minus plus Vs, and this is because of this flow of current, we will have plus minus Vs here exactly. Okay, अभी आइडियल डायोड मान लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। यस सर, यस सर। So this VR voltage drop VAB. So let us assume that Vs is equal to Vm sin omega t. So this VAB, that is our V out. So because of this conduction, this will be equal to Vm sin omega t. ठीक है? यस सर, यस सर। And this is also Vs, जितना फर्स्ट हाफ में होगा उतना भी फर्स्ट हाफ में होगा। So this is again Vm sin omega t. Okay, यस सर। दोनों हाफ में सेम है। So now you apply this KVL across this loop. So D1, V of D1 clockwise में लगाते हैं, तो V of D1, this is minus V naught minus V of S. Okay, so VD1 will be equal to VD1 will be equal to this, इस पॉइंट के बीच में हम मेजर कर रहे हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस है, माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस साइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। VD1 इज माइनस ऑफ VS minus V out, so that is minus of Vm sin omega t minus Vm sin omega t. So that's give me 2 times of Vm sin omega t. So I will be having a wave in negative direction with, now each of this magnitude is scaled by factor 2. So अब मुझे इस तरह से 0 माइनस Vm t/2 ऐसा ना मिलके मुझे कैसा मिलेगा, हर पॉइंट पे डबल हो जाएगा वो। So when sin omega t is 1, VD1 is minus 2 times of Vm, and this is defined as the peak value. So this दोनों के एडिशन की वजह से हो रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में लोअर पार्ट नहीं था। हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर हम वाइंडिंग से बनाते हैं तो वी हैव दिस डायोड एंड सिंपली रेजिस्टेंस, सिंपल। दिस इज आवर हाफ वेव रेक्टिफायर। सो व्हेन दिस डायोड इज ऑफ, वी हैव कंडीशन लाइक दिस, माइनस प्लस Vs, and this is the condition. ठीक है, तो रजिस्टर VR in this case is 0.
Okay, VR is 0 because nothing is flowing across this resistance. But in this case, because of this second diode, there is current flow through this resistance and there is voltage of Vs. So इसलिए इस केस में वो सिंपल VD ऐसा आता है और इसमें डबल हो जाता है, दोनों का ऐड हो जाता है. ठीक है? यस. ओके. Okay, so this was all about the output waveforms. So the same performance parameters like average DC voltage, RMS voltage, ripple factor, efficiency, and peak inverse voltage are defined for full wave rectifier, center tap full wave rectifier. So you have seen that peak inverse voltage is 2 times VM. So this is one of the disadvantage, and second disadvantage is that having a transformer with the center tap connection. So you have to very carefully locate the center of this winding. Okay, so all these parameters are derived in a similar manner. So we will start with average DC voltage. So we have average DC voltage. This is defined for output voltage waveform. So this is T, this is V0, and you have your output voltage something like this. This is your output voltage waveform. This is also known as pulsating DC. Between 0 to T by 2, T by 2 to T. Okay, so you, for periodic wave, you always consider one time period. So this is your one time period now, from 0 to T by 2. So time period is T by 2 in this case. Okay, and average DC voltage, we will apply the same formula. VDC is given by integration of 0 to T by 2, means area under this curve, okay, divided by the total time. So that is going to give us the average value. So 0 to T by 2, V0 dt divided by 0 to T by 2 dt. You can write directly T by 2 here. Okay, this will be equal to T by 2 T dt. So after putting limits, it will become T by 2. And what is V0? If our diode is ideal, V0 will be equal to Vin. That can be defined as Vm sine omega t. So suppose this is our Vn, like this. Secondary voltage. So this is Vn, voltage across the secondary windings, and this is defined as Vm sine omega t, where Vm is the maximum and minimum value. So V0 is equal to Vin, that is equal to Vm sine omega t. You have to put the value in the integration, 0 to T by 2 Vm sine omega t dt divided by T by 2. So you can see that this first integration, we have already solved this. This is going to give you Vm by pi and T into Vm by pi, something like this. So this T will be cancelled by this T, and we will left with some pi value. So because of this 2 factor, this will move up to numerator. So we have 2, and we have already solved this integration for half wave rectifier. This is Vm by pi. So 2 into Vm by pi. VDC is 2 into Vm by pi. So you can see that the average DC value is doubled. Obviously, we are now, instead of getting 1 pulse, we are getting 2 pulse. Okay, so DC value is doubled for this. Next, we can define like this V RMS, that is root mean square. Okay, root mean square value. So that is defined as again
under root of 0 to t by 2 v naught square dt divided by 0 to t by 2 dt. So this is how we define. Lecture का timing क्या है वैसे? 10:28. Lecture is up to 10:30 ना? Okay, so we have only 2 minutes left. So we will continue this derivation in the next class. So we will continue this derivation in the next class, and then we will define some efficiency factor. You can see that that is again doubled, and then we will discuss full wave rectifier. So full wave rectifier is again it will going to give you again the same output, but the slight architecture and the functioning is slightly different. Okay, so we have doubt. Okay, फटाफट doubt ले लेते हैं. Yes, चिराग. So कोई doubt नहीं है सर. ऋषभ. सर PIV का रियल डायोड में कैसे ग्राफ बनेगा? ये आप अभी 1 मिनट बचा है, तो आप नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में याद से पूछ लोगे इसको. ओके सर. ठीक है. हैव अ नाइस वीकेंड. सी यू ऑन ट्यूसडे. और ऋषभ आप याद से ये क्वेश्चन स्टार्ट करना. ठीक है. ओके सर. वहां से भी स्टार्ट कर.